So, hello everyone. As exams are approaching, so our thought process was कि let us help you out for preparing your 1.5 day study plan. अब जैसे कुछ सब्जेक्ट में we have 4 days, मतलब जैसे फर्स्ट पेपर में of course you are going to be getting a more days of preparation, but the idea and the strategy is to help you out to prepare your 1.5 day study plan, and this plan have been approved or blue tick by a lot of rankers which are there, right? But Aditi is there with us, right? She has prepared a blueprint of this plan, and we are going to be sharing this plan with you. With this, we are also going to be helping you to guide and tell you out how you're going to be writing the answers, right? So today we are going to be helping you out with a discussion for FR. In upcoming series, you will be able to find out other plans as well. तो मैं request करूंगा कि आप पूरे plan देखो, and if possible, right, I'll share the Word file, I'll share the Excel file and also the PDF. If you want to change it, just change it out, or if you want to use it as it is, you can just use it as it is. But it is important to have a 1.5 day study plan, because if you don't have this, right, आप कहीं ना कहीं इधर उधर भटकोगे, right? सो आइडिया एंड थॉट प्रोसेस यही है कि आप इस प्लान को यूटिलाइज करो. जरूरी नहीं है कि यही यूज करें, राइट? इट इज जस्ट आउटलाइन विच विल हेल्प यू आउट. यू कैन कस्टमाइज इट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, है ना? हम एक आपको आउटलाइन देना चाहते हैं, एक गाइडेंस देना चाहते हैं. आपके ऊपर है कि आपको कैसे फॉलो करना है. Okay. So first of all, thanks Aditi for joining in, and really happy that you have prepared this 1.5 day study plan for students out, and really happy to see you. Yes, same here. Yes. तो मैं अपने जो प्लान बनाया है उसको ओपन कर लेता हूँ, राइट? स्टूडेंट्स मैं बता दूंगा आपको कि कहाँ पे ये प्लान मिल जाएगा. विल डिस्कस इट वन बाय वन, राइट? अदिति, आई होप आपको भी स्क्रीन विजिबल है. Yes, sir. यस, बताइए प्लीज. तो आई थिंक यू कैन जस्ट स्टार्ट विद हाउ स्टूडेंट शुड प्रिपेयर फॉर दिस. Okay. Hello, everyone. So to start with FR, since FR is the very first exam, so we can prepare it in the best manner possible by doing writing practice and all. One thing I would like to start with key do don't or just audit the questions. Do writing practice because we have enough time. I have given allocated 4.5 days, and which is more than enough, and you can cover it with full writing practice you can cover FR with. So to start with, since your exam is on 2nd May, so I have started with 28th April. So we have 28, 29, 30 and 1st May, and I have allocated 12 hours each day. The reason is because since we have 4 days, so what I did and what I would suggest you to do is allocate either 1 or 2 days to theory subject, maybe audit or maybe law, whatever you feel like. Because what will happen during the audit exam, obviously it's not possible to cover everything, and audit is a subject which requires n number of revisions. So at the end of the day, you can do is what you can revise essays. Like for example, on the first day, if you have time left, so you can pick up any essay series, for example essay 500 series, essay 600 series, if it's time left. And trust me, it will help a lot in audit exam, and during the audit exam it will take less time to cover the essays. राइट. So नहीं, that सो is the आदित्य, इसमें एक चीज है कि इस बार ऑडिट वाले स्टूडेंट्स थोड़े लकी हैं, बिकॉज आई थिंक ऑडिट में 2 दिन का yes, छुट्टी है, राइट? तो yes आई sir. थिंक यू कैन कवर लॉ पैरेलली, मतलब अगर हाँ, कंटिन्यूस. लॉ भी मैंने हाँ. वही ये बोला कि ऑडिट और लॉ विच एवर सूट्स देम. लॉ में भी हम अदर लॉज जो हैं, एक हमारा कंपनी लॉ, अदर लॉज हम कवर कर सकते हैं एक एक करके. फेकरा बहुत छोटा है, मनी लॉन्ड्रिंग है, एक एक 1.5 घंटे के चैप्टर्स हैं ये. तो अगर हमारे पास एफआर के बीच में टाइम बचता है तो वी कैन कवर अलॉन्ग विद एफआर. 1 आवर 1.5 आवर हम एलोकेट कर सकते हैं. और अदरवाइज अगर वो नहीं भी करना तो फिर हम एफआर को ज्यादा टाइम डेडिकेट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसीलिए 12 आवर्स रखे हैं ताकि सब फ्लेक्सिबली उसको चूज कर सके. तो स्टार्टिंग विद माय प्लान, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन मैंने सबसे पहले रखा, एंड इट इज द मोस्ट व्हाट टू से डिफिकल्ट पार्ट. बट मैंने इसको सबसे पहले इसीलिए रखा है क्योंकि ये आना ही आना है एग्जाम में, नो डाउट. आइदर बिजनेस कॉम्बिनेशन और कंसोलिडेशन कम्स फॉर मिनिमम 15 मार्क्स. तो मैंने इसको, मतलब हम जब शुरू करते हैं तो हम वैसे ही जोश में होते हैं, तो मैंने इसलिए इस चैप्टर्स को स्टार्ट में रखा है. इन दोनों चैप्टर्स को बहुत 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 अच्छे से कवर करना है. कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं सारे. देयर इज अ क्वेश्चन ऑन चेन होल्डिंग, दैट एक ही क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल में, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट नीड्स टू बी कवर्ड. एंड रिटर्न हैंड करनी है, बैलेंस शीट बना के प्रैक्टिस करनी है, नहीं तो एग्जाम में बैलेंस शीट मैच नहीं होगी. Give appropriate time, do written practice, and
allocate 6 to 7 hours to both these chapters and practice it well. एंड उसके बाद सेकेंड हाफ मैंने इसलिए सारे लाइट लाइट वाले इंडेक्स रखे हैं क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन थोड़ा सा ज्यादा हो गया था. वन इज लाइक वन इज द 134/7 ये सारे इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, कैश फ्लो स्टेटमेंट. 8 is also then events after like balance sheet date, and 10 is fair 10 okay 8 and 10 events after balance sheet date हो गया. अपना prior period items, fair value measurement, ये सारे आधे आधे घंटे के इंडेक्स हैं. So these are not heavy also, and ऐसा नहीं है कि एग्जाम में नहीं आते. Like in my exam also in the November 22 index 8 was for around like question was asked for around 5 marks, theory question only, and they will not take much time to prepare. Index 20 again grant question may or may not come, but it's easy. 102 is share based payment, and generally share based payment में से question आता ही है, and it's very easy to cover. So first day will be like this only, and if there is any time left, so you can go for audit or law as sir said, as find suitable to you. Next day revenue recognition. Like पिछले 2-3 अटेम्प्ट से revenue recognition is the index which is getting the maximum coverage in the exam. 20 to 30 marks का आता ही आता है. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन को भी बहुत अच्छे से कवर करना है. आई नो कि स्टडी मटेरियल में बहुत ज्यादा लाइक हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, बट ऑलरेडी आप ऑब्वियसली आपने पहले रिविजन्स कर रखी होंगी, तो आपने क्वेश्चंस मार्क कर रखे होंगे जो हमें लास्ट डे पे रिवाइज करने हैं. तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की थ्योरी अच्छे से रीड करनी है, एंड उसके बाद वही क्वेश्चंस देखने हैं. इसमें रेवेन्यू रिकॉग्निशन में ऐसे होता है कि हर अटेम्प्ट में न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं. सो मेक श्योर यू गो थ्रू द पास्ट ईयर्स पेपर्स एंड एमटीपी आरटीपीज ऑल्सो, क्योंकि उसमें डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चन आते हैं. एंड आफ्टर रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज डन, 101 it is also an important index because like in the study material there are question which can come for 8 marks to prepare a new balance sheet as per the new index. So that is also very important. So like there are I think 3 to 4 questions in the study material. Practice them well and it will be more than enough. And after that there are again 24, 33, 108 is operating segment. ऑपरेटिंग सेगमेंट 10 मिनट का इंडेक्स एंड 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया था नवंबर 22 में, एंड आई स्कोर्ड फुल मार्क्स इन दैट. सो ऐसे इनको लाइटली नहीं लेना. 24 इज अगेन रिलेटेड पार्टी. इट विल बेयरली टेक 30 मिनट्स, लेकिन क्वेश्चन आएगा तो 4 और 5 मार्क्स का आएगा. 33 ईपीएस, इट्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट, वी हैव टू कवर इट वेल, प्रैक्टिस द क्वेश्चंस. लाइक 2 to 3 आवर्स में ये तीनों इंडेक्स बहुत इजीली कवर हो जाएंगे. उसके बाद में 12 and 21. 12 इज डेफर्ड टैक्स. डेफर्ड टैक्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अलग से क्वेश्चन ना भी आए डेफर्ड टैक्स का, तो वो किसी ना किसी क्वेश्चन में डेफर्ड टैक्स का एलिमेंट ऐड करते ही हैं, लाइक एडजस्टमेंट ऐड कर देते हैं वो डेफर्ड टैक्स की. तो वो भी बहुत अच्छे से कवर करने. क्लियर होना चाहिए कि कब डेफर्ड टैक्स एसेट बन रहा है, लायबिलिटी बन रहा है. उसके हम स्टडी मैट के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में डेफर्ड टैक्स का बहुत यूज होता है, तो वो ध्यान रखना है. एंड उसके बाद में 1937 एम्प्लॉय बेनिफिट्स. एम्प्लॉय बेनिफिट्स इज नॉट अ वेरी मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है और बहुत ज्यादा आसान भी नहीं है, बट इट मे कम इन द एग्जाम. इसमें जो वो टेबल प्रॉपर क्वेश्चन बनाने वाला होता है, लाइक वी हैव टू डू रिटन प्रैक्टिस ओनली. एंड कमिंग टू द थर्ड डे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. इट्स वन ऑफ द मोस्ट feared chapters according to me. Like I also was like कि ये चैप्टर कैसे होगा, इसलिए मैंने इसको 6 hours एलोकेट किए हैं. बिकॉज इसमें स्टडी मटेरियल, इफ यू ओपन द स्टडी मटेरियल, उसमें इतने वैरायटी ऑफ इलस्ट्रेशन, एग्जांपल्स, बैक क्वेश्चंस हैं कि हम देख के ही डर जाएं. बट वी हैव टू कवर इट, क्योंकि ये भी एग्जाम में आना ही है. 6 hours, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये पहले चैप्टर 1 या 2 बार कर रखा है, तो 6 hours आर मोर देन इनफ टू प्रैक्टिस ईच एंड क्वेश्चन बाय हैंड. Like there are variety of questions, hedge accounting, then other than that the component calculation, liability component, equity component. Other than that we have the amortization table type के questions. So you can practice all of them in 6 hours, and one of them is surely going to be there in the exam. And उसके बाद like asset related index 2, inventory, PPE, intangible and impairment, ये सारे related हैं, तो मैंने इनको साथ में रखा है. तो इन सबको maximum 4 hours you can take. पीपी के कुछ क्वेश्चंस अच्छे हैं स्टडी मटेरियल के बैक में. वो रिकमीशनिंग लायबिलिटी एंड वो वाले करने हैं. 36 में भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं. 38 इज लाइक मतलब उसमें इतना प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम. एग्रीकल्चर, हाँ एग्रीकल्चर में भी हमारे अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया था नवंबर 22 में.
एंड इट वाज द सेम, अगर आपने स्टडी मटेरियल और अच्छे से कवर कर रखा है आरटीपी वगैरह, तो सेम क्वेश्चन था कि प्राइस चेंज, फिजिकल चेंज, तो वो करना है। शेड्यूल 3 को मैंने टाइम इसलिए एलोकेट किया, लाइक मोस्ट ऑफ अस लाइक टेंड टू इग्नोर शेड्यूल 3, बट सिंस इट इज इन द स्टडी मटेरियल ऑल्सो, तो हमें इसे छोड़ना नहीं चाहिए। जस्ट हैव अ लुक एट द फॉर्मेट, क्योंकि कभी कभी बैलेंस शीट बनाने को आ जाती है और हमारे दिमाग में लाइक फॉर्मेट ध्यान नहीं होता। तो शेड्यूल 3, हैव अ लुक एट द फॉर्मेट ऑफ द शेड्यूल 3, एंड देयर आर 1-2 क्वेश्चंस इन द स्टडी मटेरियल, हैव अ लुक एट देम ऑल्सो, इट विल barely take half to 1 hour only. And coming to the last day, lease. Again, lease is lengthy in days, but if I talk about the questions, there are only 7 to 8 good quality questions which need to be practiced in the study material only. So if you cover like concept, theory, practical concept, and cover those 7 to 8 questions properly, leases will be done. Okay. And after that, borrowing cost, and 40 is investment property, 105 is non-current assets held for sale. These are again like important in this question, may or may not come in the exam, but they are not very difficult to cover. They'll take together take 3 to 3.5 hours to cover. Analysis of financial statement is nothing, but it's just a case study based chapter which covers case study from all the index. There are around 18 to 20 questions in the study material. Please do this chapter after you have completed all the index, and I have like allocated it after all the index because it covers questions from all the index. So it will be like just a revision of all the index you have done. CSR and integrated reporting, again they are theory chapters, and question comes in the exam. It came in November 22 also. Like integrated reporting is like there are back questions, cover that only. CSR only theory questions, it may come in the exam. So the syllabus is completed, but we still have time. And what may happen, like you on day one you have studied consolidation, business combination, you may have forgot that. So you like you have the like 2-3 hours and 4 day, and then you have exam day. You just have to revise if you think that anything is important, or I don't remember it, or like if something is left, you can have a look at the MTP, RTP. You have looked at the marked questions. All you can do is that now. This is the plan which I have prepared. Got it, got it, got it. I think you have covered every topic, right? Which Yes, is sir. there. One important thing, right? A lot of students confuse about कि sir first paper को कितना time devote करें. I think 4.5 days is a good time, right? Yes, sir. Which you should devote. Otherwise क्या होता है बाद में ना पहले पेपर में stress नहीं आना चाहिए. That is what I feel. मेरे Yes, साथ क्या sir. होता Like था? इसलिए हाँ, लाइट रखा है उसको, कि मतलब 12 आवर्स तो सर नॉर्मल ही है, इतने ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसको लाइट ही रखा है कि रेस्ट भी हो जाए प्रॉपर और पढ़ाई भी हो जाए। राइट 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 राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मैंने एक गलती की थी मेरे पहले पेपर के दिन, बोला कि 3 दिन में हो जाएगा, बट वो गलती आप मत करना। आई वुड रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज कीप अ प्रॉपर टाइम फॉर दिस प्लान विच इज देयर right now. We are going to be covering important part, that is how to present the answers in FR, right? So that is something which you are going to be covering, but before that I just wanted to tell you out ये फाइल कहाँ मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, राइट? एग्जाम मोटिवेशन May 23 करके, right? You'll be able to download a file from there. Also you'll be able to find out this files in a telegram group which is CMONK8, right? और अगर आप इस लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे you just need to log in. Once you log in, continue में आपको प्रेस करना है। यहाँ पे we have tried to share lot of things which are there, जैसे FR का प्लान है, बाकी सब्जेक्ट्स के प्लान यहीं पे आपको दिख जाएंगे, राइट? इमेजिनरी स्कोर कार्ड भी यहीं पे शेयर किया है फॉर एग्जामिनेशन। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डाउनलोड इट एंड टेक अ प्रिंट आउट, राइट? सो दैट यू कैन हैव द सेम। यहाँ पे डाउनलोड का बटन है, डाउनलोड करके अपने पास रख लो। दिस विल हेल्प यू कीप फोकस्ड इन एग्जामिनेशन एज वेल। ठीक है। यस अदिति, अब थोड़ा सा आप आंसर राइटिंग के बारे में बता दीजिए। आई थिंक यू स्कोर्ड 79 मार्क्स इन FR, मतलब Yes. ये तो बहुत ज्यादा मार्क्स होते हैं, राइट? तो कुछ ऐसे प्रो टिप्स बता दो इन पेपर राइटिंग कि what all things students should keep in mind when they are writing the paper for FR. Yes, sir. Sir, I would like to share my paper also along with प्लीज प्लीज like. प्लीज, हाँ आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सो मीनवाइल जो भी बाकी लोग देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू कि प्लीज Sir, आप I hope the screen is visible. यस यस इट्स विजिबल, प्लीज फॉलो दिस प्लान, दिस इज जेन्युइनली गोना बी हेल्पिंग यू आउट। हम ये नहीं बोल रहे कि ये प्लान ही सही है। व्हाट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू आउट इज दैट प्लानिंग फॉर 1.5 days, प्लानिंग फॉर एग्जामिनेशन बिफोर एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट। दिस विल जेन्युइनली हेल्प यू आउट टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम।
ठीक है, तो यस बिना आदित्य, प्लीज प्लानिंग कंटिन्यू। के इज लाइक, बिना प्लानिंग के इट विल बी लाइक अ मेस, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या रह गया है, क्या करना है। तो वो एग्जाम डे पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा, तो इट्स बेटर टू हैव अ प्लान बिफोर हैंड। यस। So, okay, so regarding the paper writing tips in FR, first thing I would like to share is on the exam day, since you have time, you can just go through how the answers are presented in the study material. Like proper working notes. Working notes should be prepared. They do carry marks. Don't leave the working notes. First and the most important thing is, for example, if there is a question on lease, so we have to make the amortization table and something, so we make the main table in the main solution, whatever is asked. And or for example, they have asked general entries only. So general entries will be in the main answer, and all the amortization tables should be made in the working notes. And if you'll not make the working notes, surely the marks will be deducted. Second thing is, have a look at the presentation of different chapters in the study material. For example, if I show my answer sheet, okay, this is a question on impairment loss, and this is a question was from the study material only. We had to, there were two machines, and we had to calculate. So see, first of all, whenever you're writing any answer, the first thing you need, even if it is a practical question, you have to give the reference of the index according to which you're giving the answer. Impairment loss, I read the question, I know it's from impairment loss. Start your answer with this: as per the provisions of India 36 impairment loss, and explain the provision in brief, not in very much detail. Like I have explained in 2 lines and then written the formula. Explain the provision in very brief. It will give a good impression to the examiner that you know the provision. And after then start the calculation like I have done, like this. Make proper tables and write formulas and everything. It will give a very good impression, like this. Second question, this was also this was a direct question from the RTP November 22. So that's why I'm focusing more on RTP, MTP. At least do the RTP and MTP of your attempt. And if you have time, obviously of the previous attempt also. See, I have like made proper table, like I have written everything. Trust me, presentation, like I'm not saying, if you, even if you don't make these lines, it won't deduct any marks, but at least present it clearly. That is what I want to say. See, this is the question I was talking about on integrated reporting. This is a direct question, and if you haven't covered it, you'll not, like, I have get 4 marks, and 4 marks is, I don't have to explain the importance of 4 marks, but if you leave the chapter, you will not be able to complete it. Again, agriculture, this is the presentation I have followed. Like, it is very clear. I have written original cows, then new cow, then this. So you have to be clear in your presentation. You have to give the reference of NDS. You have to mention the provision in brief, and then show the calculations, show the proper working notes. If they have asked general entries, for sure write the narration. Narration is very much important. Like, there was a question on general entries. ESOP question was there. See, this is again a theory question from Index 8. So for answering the theory questions, what we'll do, start with mention the index, start the provision, explain it in detail. Since it was a 5-mark question, I have to explain it in detail. I explained the provision in 2 paragraphs as per the provisions of Index 8, and then I explained the provision. Then I wrote the question statement in brief, that what is given in the question. And then after, at the end, you have to conclude, like relate the provision with the question statement, and then conclude. This is the best way to answer the theory question. I have scored 4 out of 5 marks in this question. So according to me, this is the best presentation for theory questions. And general entry question. I think it's being missed. Okay, I think it's in ठीक है, the. हाँ, नो प्रॉब्लम, हाँ.
Journal entry mein, I just want to say, like, write the journal entry and then write the narration only. These are some of the presentation tips. And trust me, if you know the concept better, if you don't present the answers properly, you will not be able to score good marks. So present the answers all properly also. Got it, got it, got it. So I think that is something which you should try to follow for FR. I think FR may the first paper may if your confidence goes well, trust me, you're going to be doing great. And FR may Yes. what I've seen in past is that most of the questions are directly coming from RTP, MTP or repeated Study questions. material. Yes, sir. ये बहुत ज्यादा हुआ है तो प्लीज जो आईसीआई का मटेरियल है उसको अच्छे से फॉलो करके जाए राइट एंड प्लीज डू नॉट चेंज द मटेरियल नाउ इफ यू हैव रेफर्ड योर क्लास नोट्स फॉलो दैट एज वेल मतलब ऐसा नहीं कि एंड मोमेंट में अभी कुछ बोला तो हमने चेंज कर लिया डू नॉट डू इट राइट व्हाट वी वांट इज दैट वी वांट यू टू गेट ensure that you are going to be passing this exam whatever it takes right and that is why we are also helping you out with this plans and everything out आप इस प्लान को कस्टमाइज करो इसका एक्सेल फाइल भी आपको वही मिल जाएगा so that you can customize it based on the way you want and I hope you will give your best in this paper abhi right we are recording it before the examination so that you can prepare now itself because जंग 1.5 दिन की या 4.5 दिन की है right which is gonna be helping you out so I directly say you need to perform best in those 3 hours to perform best in those 3 hours you need to plan for this 1.5 days or before that and to perform there you need to perform now well ठीक है तो दैट इज समथिंग विच वी वांटेड टू टेल यू आउट अगर किसी को कोई डाउट्स अभी भी रहेंगे राइट यू कैन पुट इट ओवर अ कमेंट सेक्शन राइट आई एंड अदिति विल कंटिन्यूअसली मॉनिटर दैट सो दैट अगर किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो विल ट्राई टू एड्रेस इट और यस ऑल द बेस्ट जो भी एग्जाम दे रहे हैं अभी राइट एंड डेफिनेटली आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप बाकी सब्जेक्ट का भी 1.5 डेज प्लान ऐसे गो थ्रू करें दिस इज गोना बी हेल्पिंग यू आउट ऑल थैंक द बेस्ट टू एवरीवन जिनके एग्जाम्स हैं एंड आई होप सब अच्छे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं. हाँ यू सी द वर्ड पास ऑन दैट मार्कशीट. ट्रस्ट मी, इट गिव्स गूज बम्स. और पार्टी दे दे हमको राइट सर पार्टी तो सबसे लेनी है. डन डन है ना चलो ग्रेट गाइस थैंक्स थैंक्स